The topic is matrices. The plural term is matrices, and the singular or the normal term we use is matrix. So we'll just going to see what is exactly matrix is. After that, we'll go the types of matrix and how to calculate actually the matrices. So as it is mentioned, matrix is an arrangement of various elements. So various elements means in simple terms कुछ elements होंगे, उनकी arrangement या उनको arrange करके लिखने को ही matrix बोला जाता है. So is an arrangement of various elements. We have to see what is element and how the arrangement is going to done. For example, very simple. Actually जब हमें I think so we all know, you all know matrix कैसे रहता है. एक बड़ा सा दोनों साइड पे ब्रैकेट रहता है, उसके अंदर नंबर्स रहते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसमें, ठीक है. सो बट डेटा कभी नहीं प्रोवाइडेड होता, बट व्हाट एग्जैक्टली, बट समटाइम्स द डेटा विल बी आल्सो देयर. सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू विद इट. फॉर एग्जांपल, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, अमित, अनिल एंड राहुल, एंड 2 प्रोडक्ट्स आर देयर, जो उनके पास कुछ कुछ पैकेट्स हैं उनके, कॉफी एंड टी वी कैन टेक. सो इन केस ऑफ अमित वी कैन टेक कि अमित के पास देयर आर 4 कॉफीज, एंड अमित के पास जो है 4 कॉफीज हैं और 3 पैकेट्स ऑफ टी हैं. सिमिलरली अनिल हैज 5 पैकेट्स ऑफ कॉफी एंड 2 पैकेट्स ऑफ टी. राहुल इज हैविंग वी कैन से 6 पैकेट्स ऑफ कॉफी एंड 4 ले लेते हैं, 4 पैकेट्स ऑफ टी. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली when we are preparing matrix. So हमने पहले तो एक इसको logical way में लिख लिया, ठीक है. तो if you can see, there are, if you know what is row and what is column, so there are 3 rows. ये ऐसे vertical horizontal shape में is your row. So this is your rows. There are 3 rows and there are 2 columns. Columns coffee का column है एक और एक tea का column है, ठीक. So matrix में what we have to do, we have to just arrange in columns and rows only. वही matrix होता है. So depends what type of matrix you are preparing or what type of matrix is in front of you. There are, because there are different types of matrices as well. So this is the kind of elements. Inko each 4, 5, 6, these are our elements only. So only it is an arrangement of various elements. So how we can write this, we can see that. So what we have done, this was the data. So इसको अगर मेरे को exactly उतारना हो तो मैट्रिक्स की शेप में लिखने के लिए this is going to happen 4 5 6 3 2 4 like this. So this is going to be the exact matrix. So this is a kind of matrix which is also known as vertical matrix, but there are 2 ways to write it down. एक तो हमने ऐसे लिख लिया. The second way is we can write down like this as well. कि हमने यहाँ पे क्या किया था, कॉफी और टी को मेन ऊपर रखा था और इस साइड पे हॉरिजॉन्टल रोज की साइड पे हमने स्टूडेंट्स को रखा था. बट हियर व्हाट वी कैन डू, स्टूडेंट्स के नाम इधर दे दिए और कॉफी और टी को इधर कर दिया. सो देयर आर 2 वेज टू गो विद. चाहे आप कॉफी और टी को रो बना लीजिए, चाहे कॉलम बना लीजिए. देयर कैन बी हॉरिजॉन्टल और देयर कैन बी वर्टिकल काइंड ऑफ मैट्रिसेस. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर matrix. And what is matrix is an arrangement of various elements. So थोड़ा सा इसको mathematically और देख लेते हैं, because the things we are, because every time numbers, obviously we know कि numbers होने वाले हैं matrix पे, but there are going to be some other things also. The basic rules for the same, those are m and n. M और N आपको बहुत यूज कर रहेंगे, because the theoretical question or quiz type of questions can be formed from this kind of things only. A set of M into or cross N numbers, or a set of numbers arranged in the form of an ordered set of M rows and N columns is called M cross N matrix. अब इसको what we have done, if you can see what we have done, हमने numbers को rows में, और there are 3 rows and there are 3 columns. So we have arranged in that form only. So matrix में what is going to happen, M जो है आपके जो rows हैं उनको we denote as M, and N we denote as columns we denote as N. तो आपको कभी भी उसका मैट्रिक्स का नंबर बोलना है ना, कि कितने नंबर किया. अगर आपको ये मैट्रिक्स समझ में आ रही हो तो यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स है.
This is what happening. 3 rows and 2 columns are there. So what is going to happen? The matrix name is going to be 3 cross 2. This matrix is going to be 3 cross 2. This is going to be this matrix name, 3 cross 2, the first one, the vertical one. Or similarly, अगर मेरे को इसका नाम देना हो, तो there are two, the name is 2 cross 3, because there are 2 rows and 3 columns. So हमेशा whenever, because questions can be like this also, तो आपको very it is needed that you have to understand कि आपका जो 2 cross 3 दिया है अगर एग्जाम में, या 4 cross 5 दिया है, तो you should have an understanding कि 4 जो first digit है, that denotes rows, और second जो denote कर रहा है, that is column. So m cross n matrix is your row cross rows, and then columns are going to be there, the numbers for them. This is how it is going to be. And element, what elements are going to be? M and N are going to be your rows and columns. And similarly, what is going to happen? Aapka jo, there is going to be element, what we are talking about. ये मैंने बोला 4 को भी, 4 भी एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है, 6 नंबर भी एलिमेंट है, 3 नंबर भी एलिमेंट है, 2 नंबर भी एलिमेंट है, एंड 4 नंबर भी एलिमेंट है. So these all are element. And वो कब बन रहे हैं अगर आप देखो ध्यान से, when both are intersecting. यहाँ पे first row और first column जब intersect कर रहा है तो आपका first element आ रहा है. Second row और first column जब intersect कर रहा है तो fifth number आ रहा है. So when one row and one column is going to intersect somewhere, there is going to be one element for the same. So that that you can see in many of the books, और जिसको हम ज्यादातर denote करते हैं AIJ के, उससे भी I is for again for ith row and jth column. M and N we use for writing down that the exactly the arrangement done in the matrix, and IJ is going to be your for if you are not writing exactly the number, अगर आप IJ के help से ही element अपनी matrix बना रहे हैं, so it is going to be AIJ and all. So this is done. This I have already discussed that we don't want to see this because हमें पता चल गया है what is this. And if you now you can see 3 rows and 4 columns, so the name is 3 cross 4. Okay, so done. So this is going to be happen with you, that this is, these rows are going to be ith I and the columns are going to be j, and when we are going to make the numbers, the name for that particular matrix, it is going to be m cross n ki help say you are going to do for the same, or I into cross j as well. So going to end this. In the next video we are going to do the types of matrices.